Hello aspirants, very good morning to you all. Welcome to another session on must solve questions. These morning sessions so far used to be about ZAT and IIFT. ZAT we are done with, ZAT is over, ZAT was conducted this Sunday. So I hope you guys are all geared up for IIFT now. So let us dive into this questions that you must solve for IIFT. Today I have collected for you numerous questions from 2007 IIFT. IIFT is notorious, is very well known for its uh, inclination towards setting questions on complex numbers, maxima minima of degree 2, degree 3 equations. So let us see what we have got for you. I am Hitesh Hariramani and I am a 99.97 percentiler in CAT Quant 2018. So some announcements to be made. On January 4th, we have an upcoming batch. On January 5th, we have an upcoming batch with these educators. You can go through their profile. This is a GDPI batch, GDPI session batch. And this is a CAT 2021 batch. You can go through their profile, watch some of their demos, and then make a call. If you decide on taking an Unacademy subscription, consider using my code hari.h. Unacademy is also introducing something new, that is Unacademy Combat. In this, you are going to solve questions every fortnight, that is every 15 days. These will be challenging questions by best of our educators. You'll have to compete and score well, and then you'll get detailed solution by top educators on the same day. This time we have the combat on 10th of January, 12 p.m. to 1 p.m. You'll have to register first. If you plan to unlock this competition, again you will need a code. Consider hari.h as my code. Prizes are: first prize 50,000 Amazon voucher, 30,000 Amazon voucher, third prize is 15,000 Amazon voucher, and fourth prize there are 100 prizes of 1,000 rupees each Amazon voucher. We have further for you an iconic CAD product in which the mentors are going to be from top tier IIMs. I'm ABC. These guys will personally mentor you, will give you test analysis and reports, will help you with the preparation of other exams other than CAT, ZAT, IIFT, and MAT, CET, SNAP, CMAT. We call them OMETs, other management entrance tests. This comes with all the benefits of Plus. What are those benefits? कभी भी lecture देखो, कितनी बार भी repeat करो, same lecture you can watch under multiple educators multiple times. It comes with all these benefits. One new feature we have added is you can click a questions photo that you have a doubt, highlight the question, send it to us, and we'll give you 24/7 doubt solving. That is the latest feature we have added to the Unacademy app. So, brief introduction of mine. I'm Hitesh Hariramani. I have been teaching aspirants since 2008. I have been training faculties since 2016. For one of these players I have worked for, I have been training faculties for Pune, Nagpur, and Ahmedabad. Nasik also have trained one of their faculties. I've worked for Career Forum in past. I've worked for IMS for a year and a half in past. I've worked for Takshila a year and few months. Time I have worked for 4 years. Genesis Mentors I have worked for a year and a few months. Career Launcher I have worked for 5 years. Over the years I have appeared CAT numerous times. These are some of my performances: 99.97, 99.96, 99.9. This year also 2020 I got one more 99.9. 99.5 2019 quant. I have 99.9 so far 3 times. Overall also I am able to do pretty well in CAT with 99.59 overall percentile in 2010, 99.26 in 2014, and I have a couple of more 99s. Sir, आप क्या बोलना चाह रहे हो? I'm trying to show you, I'm trying to tell you. Methods that I share in my sessions are the methods I apply in these exams. So if I'm able to do this well in exams, if you learn these methods properly, apply these methods properly, you should be able to do well in these exams. I'm not bragging here, I'm saying methods are up to these standards. Apply. If you want to follow me on Unacademy, this is my educator code unacademy.com @hari.h.
and the Telegram group which I'm mentoring right now is Hari underscore Tesh. You can send me your doubts, whatever doubts you have on this particular group. I'm refreshing my screen. Yeah, you can. Good morning, Shahzada. But you can also send me doubts or send me questions through the live chat. So let us start. The first question comes from complex numbers. Again, these are questions taken from 2007 IIFT. You can verify, download the paper and verify. So you have roughly 1 minute to give it a shot. I'll cover some background theory of complex numbers here, not all complex numbers, properties of omega. IIFT बेटा बदनाम इन चीजों के लिए या पहचाना जाता है इन चीजों के लिए हायर लेवल एल्जेब्रा क्वेश्चंस डालना, हायर लेवल ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस डालना, मैक्सिमम क्वेश्चन डालना. क्यूबिक इक्वेशन का मैक्सिमम बेटा वी डोंट हैव मेथड फॉर, थ्रू डिफरेंशिएशन से ही जाना पड़ता है हमें. So 1 minute, start guys, start, solve. चलो 1 minute is up. First of all beta, omega is equal to cube root of unity. Some properties of omega: 1 plus omega square is equal to 0. Furthermore, if you come across any power of omega as multiple of 3 plus r, it is as good as omega ki power r. Very basic properties of omega. 1 plus omega is equal to minus omega square, 1 plus omega square is equal to minus omega, and so on and so forth. This is called the cyclic property of omega. This is the value of omega. Now, this is a determinant. What properties do we know of determinants? We can add all the rows, all the columns, and still maintain the same sum. So what I'm doing is, I'm adding this here, I'm adding this here. You don't have to write that C1 becomes C1 plus C2. You don't have to write. So what is 1 plus 1 plus 1? 3. What is minus 1 plus 1? 0. What is omega square minus omega square? 0. That is why I'm adding. This is nothing. This is nothing but omega. See here. This is 3 plus 1. So power is 1. This is omega. So when I add, I will have 1 plus omega square. How much is that, beta? That is 0. Now, I need to know, or I must have a method for opening the determinant. Rest of my job is done. Omega property I have applied. I have reduced one of the columns to 0. So when you open from 3, this row and this row is gone, this column is gone. You multiply these diagonally, that is positive. When you multiply, you'll end up with this is omega, this is omega, this is omega, this is omega, power 1. You will have minus omega cube. When you cross multiply, you will have minus omega to the power 4. Let me rewrite this for you. Omega cube is 1. Omega cube is 1. So here what I have is minus common 1 plus omega here, and this is nothing but beta omega. This is nothing but omega. What is 1 plus omega? Minus omega square. When I put minus omega square, it becomes positive. So 3 into omega square minus omega, omega common, omega minus 1. Which option says so? Answer option B, Bombay. Is this solution clear to you guys? If you want me to repeat any of these properties, let me know. Now, how do I know, or how did I know that I must add these columns? But look at answer options. Every answer option starts with a 3. How do you get a 3? By adding 3 ones. So that gives me a hint that I must add these columns in the first place, or the second, or the middle. That is up to you. But add these columns to generate 3. Now you have to apply properties of determinants. How to open determinants? Omega cube, guys. Omega cube is 1. This is 1. This is 1. Omega cube. This is omega cube is equal to 1. So you revised couple of properties of omega.
Very easy stuff, guys. But Shehzada, which part do you want me to repeat? Because there's a lot of stuff on the screen. Do you want help with the determinant part or do you want help with the properties of omega? Let me start from the beginning. I see all the answer options starting with 3. So that tells me add. So property of determinant is the determinant does not change when you add or subtract columns. So I added second column to first, I added third column to first. So it becomes 1 plus 1 plus 1, 3. And when you add this and this, it becomes 0. When you add this and omega to the power 4 beta, omega to the power 4 is omega cube plus 1. ये देखो यहाँ पे the property of Sackles. So this becomes omega cube plus into omega. That is 1. That is omega. So this is omega basically. Now, how do we open determinants? From this place, if you open diagonal multiplication positive, diagonal multiplication negative. So I multiplied omega here, minus omega cube, and I multiplied these two. Now this is nothing but 1 minus omega. This is 1. So I took minus common. So I have got 1 plus omega minus common, and this is omega. 1 plus omega beta is minus omega square. But Pratik, you look at this value of omega. This is the value of omega and this is the value of omega square. You need to have this knowledge. See, looking at this property, then only I came to it is the cube root of unity. Yeah, Pratik, observe. Look at the left hand side term. That is the value of omega. So this is a moderate level question on permutations and combinations. I'll give you 1 minute to try. Give it a shot, guys. Give it a shot. I hope you get the right answer. Comment your answers. Comment your answers. Plus, if you have friends who are worried about higher level content in IIFT, share the link of these sessions with them. Whenever I see a question which is slightly off the track of CAT, or if I see some question has some additional theory that we do not cover in CAT, I'll be covering theory for that along with the question. Answers beta, answers चाहिए हमें यहाँ पे. First of all, I see this is a summation symbol. I'm going to form a sequence and add. I have no idea about any sequence that is related to permutations. So now comes the property of hit and trial. I'll replace r is equal to 1, r is equal to 2 and try and get an answer. And trust me, within 2 to 3 days, I should be able to find the answer. If I put r is equal to 1 and n is equal to 1, so what I will have is 1p1 upon 1 factorial. How much is that? 1 upon 1, which is 1. So when I put n is equal to 1, r is equal to 1, I get value of this as 1. So when I put 1, this is equal to 1, this is equal to 1. One of these is my answer. When I put n is equal to 2, what do I have? I have 2p1 upon 1 factorial plus 2p2 upon 2 factorial. What is 2p1 beta? 2 factorial upon 1. So that is basically 2. When I use this, this is 2 factorial upon 0 divided by 2 factorial, which is 1, which is 1. So the value is 3. So by putting n is equal to 2 here, you get 4, not the answer. By putting 2 here, you get the answer as 3. Is this approach clear to you guys? I have been asked to add a sequence, and sequences and series must exhibit a pattern.
So I'm able to observe that pattern by putting the value of r is equal to 1, n is equal to 1. That is one term, one sequence. The second one is two term, one sequence. Is this the best way to solve? No, beta. If you know something about permutations, permutations are derived through combinations multiplied by r factorial. So if you ask me NPR upon R factorial, you are basically talking about combinations. And yes, there is a sequence for combinations to be added. And that sequence is, please observe, NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCN is always to the power n. That is summation of all binomial coefficients, you say, or selection of zero values to n, you can call it selection of 0 to n. See, this sequence will start with r is equal to 1. So what do I not want? I do not want this. What is nc0 beta? 1. So you transfer it, you have nc1 plus nc2 plus ncn is equal to 2 to the power n minus 1. This is your answer. What is new here? Are you aware of this? Are you aware of NPR, permutations generated from combinations? That tells me NPR upon R is basically combinations. And then put R is equal to 1, 2, 3 up to N, and your job is done. I hope you guys are learning new stuff here. I hope you guys are getting answers. A yes or no will do. So again, same drill, 1 minute. Read the problem. Create a strategy in your mind and we'll solve. I'll try to be live as much as I can. If I'm not live or if some other thing crops up, I will conduct some sessions on an academy platform in that case with more IIFT problems. क्या कह रहे हैं? मिस्टर जीवन के पास कुछ पैसे हैं, उनके दो बच्चे हैं. He wants to distribute the money so that in future they could use it. He divides the sum 18,750 between his two sons of age 10 years and 13 years respectively in such a way that each would receive same amount at 3% per annum compound interest when he attains a age of 30 years. What is the original share of the younger son? दो बच्चे हैं, एक यंगर एक एल्डर, दोनों कुछ पैसे देने हैं और जब उनकी एज 30 इयर्स होगी उनको पैसे बराबर मिलने चाहिए. द प्रॉब्लम इज 3% आप कैसे हैंडल करोगे? देखो, मैं यंगर वाले को मान रहा हूं रुपीज वाई. आई एम अज्यूमिंग द यंगर वन टू हैव रुपीज वाई, एल्डर वन हैव टू हैव रुपीज ई. अब देखो, जब आप 3% कंपाउंड करते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 103 अपॉन 100 टू बोथ. कंपाउंडिंग प्रिंसिपल बेटा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n. तो जो यंगर है उसकी एज 10 इयर्स है, जब तक वो 30 पहुंचेगा उसका पैसा 20 टाइम्स कंपाउंड होगा. जो एल्डर वन है वो 13 इयर्स की एज पे है, तो जब वो 30 पे पहुंचेगा तो 17 टाइम्स पैसा कंपाउंड होगा. सो दिस मनी इज गोइंग टू बी इक्वल फॉर बोथ. तो डायरेक्टली अब देखो कुछ कैंसिल हो गया. आई गेट y मल्टीप्लाइड बाय 1.03 क्यूब इज इक्वल टू e. And y plus e I have is 18750. I mean, not necessarily you don't have to revise the entire thing, but अगर हो सके तो मैक्सिमा मिनिमा थोड़ा आप देख लो डिफरेंशिएशन वाला और थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की देख लो. अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर आप स्किप भी कर दोगे इस तरह के तो आपके पास और बहुत क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए.
तो मैं एक बार ये सॉल्व करता हूँ आपके लिए, देखो। बेसिकली मेरे को यंगर का चाहिए, तो आई पुट दैट वैल्यू y प्लस 1.03 क्यूब y इज इक्वल टू 18750। अब थोड़ा ध्यान देना, आईएफटी में जो एनटीए का जो मॉक अवेलेबल है या उनका जो इंटरफेस है उसमें कैलकुलेटर मुझे नहीं दिखा बेटा। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये मेरा, ये देखो, मैं आई ब्रेक दिस एज a प्लस बी और मुझे क्यूब चाहिए। तो 1 का क्यूब आएगा, फिर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, इंटू 0.03 आएगा। ये तो पता है ना आपको, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी। अब क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 3 आएगा, इंटू 1 आएगा, और 0.03 का स्क्वायर आएगा। 0.03 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि 2 डिजिट पीछे है, तो 0009, 309, ये बहुत पीछे चला गया बेटा। तो व्हाट डू आई हैव बेसिकली हियर इज 1.09 और 027, फॉरगेट दैट। ये जब यहाँ पुट होगा, ये जब यहाँ पर पुट होगा, चलो लिख देते हैं आपके लिए, ये आपका होगा 0.027, तो ये आपका 27 ऐसा आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू। जब ये यहाँ पुट होगा तो ये विल हैव 2 इंटू रादर 2.092 into y is equal to 18750. There is no way that I am going to ask you to divide these. ये डिवाइड करने आपसे मैं नहीं कहूंगा। Look at these answer options. 8,900, 8,500, 8,900, 8,900। तो मैं कह रहा हूँ इसको 8,000 मल्टीप्लाई करो, इसको 8,000 मल्टीप्लाई करो। आप जब 1000 लगाओगे तो 3 डिजिट चले जाएंगे, तो बेसिकली 2092 into 8। So what is that? That is 16 carried over 1, 72 3 carried over 7, 16। तो बेटा मेरे पास 16,736 रुपए ऑलरेडी है। मेरे को 18,750 जाना है, तो मेरे को रफली 2,000 रुपए और चाहिए, 2,000 रुपए। तो देखो, अगर मेरे पास 2.092 है और मैं इसको 900 टाइम्स अगर विजुअलाइज करता हूं, तो बेटा ये 2 डिजिट आगे आ जाएंगे, 209.2 इंटू 9। तो ये हो गया 18 कैरेट ओवर 1, 18 81, तो आपका आ गया 2 कैरेट ओवर 8, 18। देखो आपको यहाँ 2,000 रुपए चाहिए थे, 1800 रुपीज आ चुके हैं, 1880 आ चुके हैं, आपको 1,200 रुपए और चाहिए। तो मैं आंसर इज डेफिनेटली दिस और दिस, और मैं आंसर इज दिस। अभी देखो बेटा, ऑलरेडी आपके पास 2.092 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 1,200 तक जाने के लिए बेटा, रफली 60, रफली 60 से कम मल्टीप्लाई करोगे। तो योर आंसर इज दिस बेटा, ये आपका आंसर है। अगेन आई हैव टू टीच, सो आई हैव टू राइट एवरीथिंग। और आप कहीं भी देख लो इस तरह क्वेश्चंस लोग नहीं बना रहे हैं, वो स्किप कर रहे हैं। सी आई हैव टू टीच द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कैलकुलेशन, हाफ ऑफ इट आई कैन डू मेंटली। जो क्यूब वाला पार्ट है, हाफ ऑफ इट आई कैन डू मेंटली। Once I reach the level of 2.09 into y, now I have to check। डिवाइड करना मेरे लिए फीजिबल नहीं है, आपसे अगर होता तो डिवाइड कर लो। ऑन स्क्रीन आई डिड नॉट सी अ कैलकुलेटर इन एनटीए मॉक्स। लर्न दिस थिंग्स। मैंने 8,000 टाइम्स कर दिया, 3 डेसिमल हट गए, आई गॉट अ नंबर। मेरे को और चाहिए 2,000, तो मैंने 900 टाइम्स से चेक किया, बिकॉज 2 into 900 is 1800, दैट इज मैचिंग हियर। आई नीड फर्दर 1200 वैल्यूज, आई नीड फर्दर 120 वैल्यूज, 120 वैल्यूज। इज दिस सॉल्यूशन क्लियर गाइस? ऑप्शन बहुत दूर दूर है। इसके बाद देखो 8 9 के बाद यहाँ पर 8 9 6 9 है, विच इज, इसके बीच में 10 का गैप है, इसके बीच में 30 का गैप है। एक क्वेश्चन दो और बनाते हैं बेटा आपके लिए। हाँ, सो बहुत ही आसान सवाल है ये, r+1 है। टेक अ मिनट, बड़े प्यार से आप आंसर दे दोगे, ऑलमोस्ट ऑब्जर्व करके आप आंसर दे दोगे। गिव मी आंसर फॉर दिस। बेटा दोज ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग अस लेट, मैंने जो पहले के 15 मिनट हैं उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ प्रॉपर्टी कवर करी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा। वो कभी भी आपको टाइम मिले तो एक बार आप रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना यूट्यूब पे। ये सेशन अभी चलते रहेंगे अगले कुछ दिनों के लिए।
लेट मी सॉल्व दिस। ये कह रहे हैं देयर आर 50 रियल नंबर्स x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू x50। जो एक्स आर की वैल्यू है वो छोटी है एक्स आर प्लस वन से। मतलब आप ये कह रहे हो अगर अभी यहाँ पे कोई नंबर रखा है R3 तो R4 से छोटा है, R4 R5 से छोटा है, R6। तो बेसिकली ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो आप बोल रहे हो 5 नंबर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x20 इज द मिडिल नंबर। तो because you're going to select 5 numbers, so 50C5 is your total sample space. You want the 20th number to be in the middle. तो नीचे कितने नंबर है बेटा 19। आप 19 में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो। और 20 से ऊपर कितने नंबर है, देखो बेटा 21 से अगर आप 50 तक जाओगे देयर आर 30 नंबर्स। तो 30 में से कोई भी दो सेलेक्ट करो, दैट इज योर चॉइस। तो आई थिंक बेटा अमन आपका क्वेश्चन था, समझो ऐसे क्वेश्चंस भी आईएफटी में आ रहे हैं। दिस आल्सो इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2007। तो इनको बनाएंगे हम। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं क्लिक कर रहा है या नहीं बन रहा है, इसको बनाएंगे एंड विल ट्राई एंड क्लियर सेक्शनल कट ऑफ्स। बढ़ते हैं इनसे आगे। आई हैव 4 मोर मिनट्स। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और बनाता हूं। The digging work of DMRC on Andheri Kurla stretch requires 24 men to complete the work in 16 days. As a part of the task, if DMRC was to hire 32 women, they can complete the same work in 24 work days. 16 men and 16 women started working and worked for 12 days. Due to time-bound schedule, the work had to be completed in remaining 2 days, for which more men were employed. How many more men were employed? टाइम एंड वर्क का सवाल है। लैंग्वेज बहुत सारी है, आईएफटी इसके लिए भी जाना जाता है। लैंग्वेज 8-8 लाइंस की, 9-9 लाइंस की होगी। सो यू मस्ट बी वेरी क्विक इन रीडिंग क्वेश्चंस एंड ब्रेकिंग डाउन लैंग्वेज। 24 जब मैन काम कर रहे थे, देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक मैन की स्पीड m है, तो ये 16 डेज के लिए काम करे, दैट इज द वर्क। यही काम 32 वुमेन कर रहे थे इन हाउ मेनी डेज, 24 डेज। बेटा ये वर्क है, डोंट कैंसिल एनीथिंग हियर। अब ये वर्क आगे भी कराएंगे, बट लेट अस टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। डोंट कैंसिल एनीथिंग हियर। इफ आई रीराइट दिस, कैन आई से m upon w? 24 cancel, what do I have? 32 upon 16, that is 2/1। ये मुझे पता पड़ गया is the speed of men and women। तो अगर मैं इसको ऊपर पुट कर देता हूं 24 into 2 into 16, ये आपका वर्क है। अब लैंग्वेज सुनना। 16 men, देखो 2 स्पीड है ना, पुट करो वहां पे, एंड 16 वुमेन, ये लोग काम कर रहे हैं। देखो 12 डेज के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। अभी मेन हायर होंगे और 2 डेज और काम करेंगे। लिसन टू द लैंग्वेज। कैन आई से ये लोग 14 डेज काम कर रहे हैं, और जो आपने एक्स्ट्रा मेन, एन नंबर ऑफ मेन आपने हायर किए, मेन की स्पीड 2 है, ये लोग 2 डेज काम कर रहे हैं। प्लीज फॉलो दिस। ये थोड़ा ट्रिकी है, प्लीज फॉलो दिस। ये आपने पहले वर्क निकाल लिया फॉर ऑल ऑफ देम कंबाइंड। यू फाउंड दैट द वर्क ऑफ ऑल ऑफ देम कंबाइंड। 16 men and 16 women have already worked for 12 days। 2 दिन और काम करेंगे, तो 16 men 16 women will work for 14 days। अब जो न्यू नंबर ऑफ men है उनकी स्पीड 2 है और 2 दिन काम करेंगे। दिस इज द टोटल वर्क। नेवर मल्टीप्लाई विदाउट एनी रीजन। देखो ये क्या है, 16 into 3 into 14 which is 42। ये क्या है, 16 into 48। 48 minus 42 is 6 into 16। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब क्या बच गया इधर, 4 into n। तो ये कैंसिल 4। तो यू विल हैव टू हायर 24 more men to get the job done। लर्न दीज मेथड्स बेटा। यही मेथड लगा लगा के, इसी तरह से सोच सोच के मैं एग्जाम में डिसेंटली स्कोर कर पा रहा हूं। So learn these methods, apply these methods, and I will see you guys in the next session of IIFT questions. More IIFT questions to solve. आज शाम को मैं स्नैप के लिए रिवीजन सेशन रख रहा हूँ, हाफ एन आवर का। उसमें 2 कंसेप्ट 3 छोटे छोटे कवर करेंगे और 3-4 क्वेश्चंस बनाएंगे। जो लोग लेट आ रहे हैं बेटा, दिस इज माय प्रोफाइल ओवर द इयर्स। आई हैव वर्कड फॉर दीज लीडर्स इन द इंडस्ट्री, और plays in the industry, Career Forum, IMS, Takshila, Time, Genesis, Career Launcher, and I have scored 99.97, 99.96, 99.9, 99.5, and so on, so on, so on.
If you want to follow me on Unacademy, बेटा ये प्रोफाइल है मेरी unacademy.com hari.h. And if you want to send me questions on Telegram, ये मेरा Telegram group है hari_Hitesh. So I'll see you guys in the future sessions. Those of you who are late, please try and be on time, guys. मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ अपने साइड से. कुछ और जानना पूछना है क्वेश्चंस के बारे में, लेट मी नो.